Hey guys, welcome to this very special launch of POCO. Today we have the entire POCO team here with me. As you can see, we are all equally excited to bring you this amazing product. But before we get into the product, I want to give you a quick update of what we've been up to since the last time we met. Now you guys all know the POCO portfolio pretty well. We've got the Smart Starter series, the POCO C series, which pretty much has changed the game under 10K. But then when you move up, you've got the mid-range powerhouses in the M series. And then you've got the X series giving you this flagship experience at an unbelievable price. And then there is the flagship series, the F series. But that's for another day. Now let's move on to some of the amazing results that we've been seeing thanks to all the love that you've given us. POCO became the #3 brand in online in under 10 months since it went independent. That's all to do with the love that you provided and of course the hard work of the team here. But what's even more amazing is all our phones have hit the million mark. Whether it's the C3, the M2, the M2 Pro, the X series, all have done incredibly well. Now the last phone we launched, the POCO M3, all of you have absolutely loved that phone. In fact, on day one, we sold more than 1.5 lakh phones of that. And as we stand today, we are at 500,000. And that goes to show our commitment to all of you guys to providing incredible products every single time. Today, we are kicking off season 3, as we call it internally. Now, for the last 1 year, almost all the fans that we've met kept asking us for the POCO F1 successor. What made the POCO F1 a legend? You got a Snapdragon 845 starting at 21,000 rupees. And of course, everyone loved it. It changed the Indian smartphone industry forever. While the POCO F1 was launched in August of 2018, it's been 30 months and not a single phone at this price
has been able to beat its performance. Almost 80% of the people who bought a POCO F1 in 2018 are using it to this date. Today, we are here to beat the unbeaten because we know that only a POCO can beat a POCO. Introducing #Proformance, the POCO X3 Pro. Now, when we are talking about the X3 Pro beating the POCO F1, obviously we had to focus on the performance part of it. And I think we've gone all the way here. We've got the exclusive Qualcomm Snapdragon 860 powering the X3 Pro. The POCO F1 with a Snapdragon 845 does almost about 360 to 370,000 on Antutu. A couple of recent chips that were launched, say the Dimensity 800U or the Snapdragon 750, do about the same performance and come in at 320 to 330,000, below the POCO F1. Even the 765G, which was launched towards the end of last year as a flagship killer, does not come anywhere close. In fact, it's lagging behind even the 750G. Now, X3 Pro scores almost 500,000 points on Antutu. It completely decimates all of these phones that you've seen here and sets a completely new benchmark in the smartphone industry for years to come. Now, you are seeing this massive jump in performance thanks to the Cryo 485 cores, the Adreno 640 GPU, and also an advanced AI engine. In fact, when you look at the POCO F1 and the Snapdragon 845, it beats the 845 on all three parameters. Now, not just the most powerful processor that we've seen in the segment ever, we are also upping the game when it comes to storage. We are giving you the best storage available in the market today, including all the flagships, UFS 3.1. 3.1 is 3 times faster than UFS 3.0. But when you look at the UFS 2.1 that was there on the POCO F1, we are taking a 14 times jump. Everything runs faster. Your games and apps load much faster than anything else out there. But not just that, when you're writing data or reading data off the storage, it's the fastest in its class. You're getting 128 GB of this UFS 3.1. We understand that the X3 Pro users are performance seekers. And when you start putting in high performance games there, things fill up really fast. Take for example, the Genshin Impact game. That is a 10 GB download to start with. Now you can imagine a couple of these games, your data, and of course, everything else that you would do, and 64 GB is just not going to be enough. Now we are going to start this on 128 GB. However, you have also the option to expand via external micro SD cards. And that you can take up all the way to 1 terabyte. And you also get up to 8 GB of DDR4X RAM, completing this entire trinity of performance. In the front, you've got this large 6.67-inch display. But that's not all. You also have support for 120 Hz reality flow. So it's super smooth. And to make it even better, you've got a 240 Hz touch sampling rate. This display is also a smart display. You've got different types of content that you see on a daily basis on your phone. It could be a cricket match or a TV show or that movie you like, or of course, with the X3 Pro, game on it. Most TV shows are at 25 frames per second. So it makes sense that the display shows them at a multiplier of 25, and in this case, it's 50. Most movies are at 30, and you get to see them at 60. And of course, this is X3 Pro. You've got Adreno 640 driving in for that gaming performance. Now, if you're watching a content which was shot at 25 frames per second, should be seen at 50, but your display is showing it at 120 throughout, not only will you see screen tearing, but you're burning battery where you don't really need to. You're getting a HDR10 certification, and of course, the phone is certified for Widevine L1. That means you can enjoy all the content from streaming services in HD quality. And to take your multimedia experience to the very next level, the X3 Pro comes with stereo speakers built in, and these speakers are loud. But we're not stopping there. You also get a whole bunch of cool things. One, aptX HD support. For those of you
who are using Bluetooth headphones that can actually support haptics, you get better sound as well. And we've not forgotten the stuff that you love. It still has an IR blaster that lets you control thousands and thousands of devices in your house. You also have a headphone jack here, but not just an ordinary headphone jack. You also have support for high-res audio. So when you're watching movies, listening to music, or playing that next killer game, you're gonna love it on the X3 Pro. Now you've got so much power, but what's driving it? Let's look at the 2-day battery life on the POCO X3 Pro. Now this is a 5160 mAh battery capable of giving you almost 10 hours of gaming or 22 hours of video playback. Now in fact, when you do go down, it can charge really quickly. The 33 watt MMT charger can charge the X3 Pro up to 58% in just half an hour. Unlike other chargers with MMT technology, you're able to charge your battery in parallel, making it much faster. Now this is with the in-box charger. But what happens if you're outside and you need that fast charge? Or say you only have your laptop charger with you. This is where compliance with USB PD becomes super important. What is USB power delivery? Well, it's an overall industry standard that lets you use different chargers to be able to charge your devices faster versus only depending on that one particular charger that you've gotten in the box. And this is a standard that at POCO we really want to push forward. It is important that you are getting that choice. You can choose any charger that supports USB PD and your phone should be able to charge fast even then. Now the X3 Pro features a 48 megapixel AI quad camera setup. The X3 Pro features a Spectra 380 ISP. Nothing even comes close in this price class when it comes to image signal processing. You see, the image signal processing on this is built onto the chip itself. At a hardware level, you're getting incredible performance to be able to do AI-based object segmentation as well as the entire color science and brightness that you need for incredible images. Now here's a really good boy, looking extremely sharp and patient. But of course, what you need to focus on is the image detailing as well as the segmentation that you see from the background. Now this is happening because of the Spectra 380 kicking in when you're taking those images from the camera. We actually went ahead and took an image from the camera and printed it on a 10,000 square foot billboard in Bangalore. It has that kind of capabilities. This camera is not just about taking amazing pictures. It's also capable of doing a lot of cool, fun things. Check out this video to know more. Corning's Gorilla Glass 6. Now this is giving you advanced protection for your X3 Pro. Now this is a glass that you normally see in higher priced devices. What's funny is some of the launches that you've seen recently aren't even calling out any kind of protection. Not just an amazing display protection, but we've also got you covered with an IP53 rating. Now this is covering you against your daily dust and water ingress. Let's take a look at the device itself. Now here's an Easter egg for all you POCO F1 fans. Well, we are naming these colors as graphite black, steel blue, and of course we're adding a third color called golden bronze. So what you see here is the same matte finish on the colors that you saw on the F1. On top of that, we've added a chroma logo, making the entire thing look really cool, and it helps repel fingerprints too. And to complete the package, you get POCO Clean Experience on the X3 Pro, which means it is clean, no ads, no monetization, entirely yours.
Now coming to my favorite section, gaming. Now last year, I think it was around September or October, in one of the AMAs, I remember one question coming in. What do you think of flagship killers that were coming in at that point at 27,999, 28,999? And frankly, it was quite disappointing. You can't have a 700 series chip and call it high performance or a flagship killer. We wanted to create a flagship killer, and that's why today we have the X3 Pro. Now the POCO F1 was one of the first in its segment to get in liquid cool technology into a device, and the results were astounding. Almost all the gamers loved it. Now with the X3 Pro, we are taking it further, 70% further. Yes, the liquid cool plus technology on the X3 Pro features a heat pipe that is 70% larger than the POCO F1, which basically means it's able to draw out the heat from the SoC faster so that your processor stays cool and it stays at peak performance for your lengthy gaming sessions. Nobody plays games just for a few minutes. When you are a serious gamer, you are going in for hours. And during those marathon sessions, the peak performance can really get throttled if you don't have the right cooling system. With liquid cool technology plus, you can have that sustained peak performance required. And that can be a difference between frame drops and lags towards the end of your game, where you let your competition win or you take the trophy yourself. Now we've taken Antutu here. Now Antutu stresses your CPU, GPU and other components quite severely. And we ran Antutu 5 times in a row to see if there's any throttling coming in the X3 Pro or the competitive devices. Here's a result. You can clearly see on the X3 Pro, while it's sustaining this peak performance, a couple of other competitors really take a hammering here. The X3 Pro takes the gaming story to the next level with Game Turbo 3.0. You're getting performance optimizations, network optimizations, and even sound optimizations. Exactly the thing that you need to become a pro gamer. In short, if you're a pro gamer, X3 Pro is a no-brainer. So guys, that was the POCO X3 Pro. #performance. But let's see how the X3 Pro compares with some of the competition out there. We are comparing the X3 Pro with 3 other competition phones here. You've got the Realme X7, you've got the OnePlus Nord, and you've got the Samsung F62. From a performance perspective, none of these even come close. Perhaps the Samsung one does show a high Antutu score for the first time, but we saw without the right cooling tech how badly it can throttle. From a storage tech perspective, the X3 Pro is the only one to give you flagship level UFS 3.1. From a camera perspective, you saw how the computer vision ISP on the X3 Pro sets it apart from everything else out there. The X3 Pro is the only phone amongst these to feature a high refresh rate. You're getting a 120 Hz refresh rate. Not just that, you're getting a smart refresh rate display tech. The X3 Pro is the only one here with USB PD support and the only one with Corning's Gorilla Glass 6 protection. Now from a pricing perspective, you've got the X7 starting at 20,000, while the Nord and the F62 are at 28, 24 respectively. So what should the X3 Pro cost? However, all of you know the main competition for the X3 Pro, in fact, is still the POCO F1. That is the phone to beat. So maybe let's do a quick comparison in terms of how things have changed from the F1 to the X3 Pro. Now compared to the POCO F1, the X3 Pro is almost 40% faster. It features a liquid cool plus technology, which is much cooler. From a display perspective, you're going from a 60 Hz to a 120 Hz refresh rate and a smart display with almost 4 times the touch sampling. Endurance is also higher on the X3 Pro. You have a 5160 mAh battery and fast charging, a huge step up from the POCO F1. We've also upgraded from the 12 plus 5 MP on the POCO F1 to a 48 MP quad camera setup along with computer vision ISP. The storage tech on the X3 Pro is 14 times faster
as UFS 3.1 handily beats the UFS 2.1 on the POCO F1. What we have retained are the two colors. So you're getting graphite black and steel blue that you saw on the F1, but we're adding a brand new golden bronze to the mix. So as you can see, we've upgraded almost everything from the F1, including the most important part, the performance. Now the F1 started at a price of $20,999 for the 664 variant. The question is, can we match that price? Now, when it comes to pricing, as you saw, even if you go all the way to almost 30,000 rupees, you're not able to match the performance of the X3 Pro. So how much should it really cost? Well, you know it is coming in two variants, the 6GB 128GB and the 8GB 128GB. Well, happy to share, the 6GB 128GB variant of the X3 Pro will be available at a price starting $18,999. That is just 16,100 plus GST. And the 8GB 128GB variant will be at a starting price of 20,999 only. That is just 17,796 plus GST. So the question is, when and where can you get the X3 Pro? The X3 Pro will be available on Flipkart on the 6th of April at 12 noon. Along with these awesome prices, you're also getting some really exciting launch offers. And the good news is, our price performance dominance does not stop with the X3 Pro. We are taking it to all new price class. You can get the POCO X3 with a Qualcomm Snapdragon 732G at a new starting price of $14,999. With this price, the POCO X3 Pro becomes the most powerful phone launched under 20,000 in the history of Indian smartphones. And that's it from all of us here today. Hopefully you guys would love the POCO X3 Pro and you would love the new price performance benchmark that we've set here. Thank you, take care, stay safe, stay healthy. बेस्ट स्मार्टफोन है। ओके, मैं आवाज चेक कर लेता हूँ कैसी आ रही है। इसको जरा बंद कर देते हैं, आवाज चेक कर लेते हैं कैसी आ रही है। बेस्ट, ओके ओके, पैसा वसूल फुल। जी हाँ, Redmi Note 10 सीरीज और Realme 8 सीरीज को किल कर दिया है पोको ने, अपने ही ब्रांड को किल कर दिया है। डेफिनेटली आंख बंद करके परचेस करने लायक फोन है। दी बेस्ट प्रोसेसर है, ओवरऑल दी बेस्ट स्मार्टफोन आपको देखने को मिल रहा है। जैसा उम्मीद था पोको से वैसा ही पोको ने किया। और अगर आप फर्स्ट लॉन्च ऑफर पे लेते हो जिसमें आपको 1000 रुपीज का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, तो मैं कहूंगा कि सोने पे सुहागा वाला काम कर दिया पोको ने। दी बेस्ट। अगर किसी को Redmi Note 8 सीरीज या किसी को Realme 8 सीरीज कंसिडर करना था, डेफिनेटली वो पोको का X3 Pro ही अभी खरीदेंगे, और कोई स्मार्टफोन खरीदने का कोई मतलब भी नहीं होता है। वैल्यू फॉर मनी है, जी हाँ बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है। F3 कब होगा? F3 होगा, जल्दी ही लॉन्च होगा। उन्होंने कुछ कहा नहीं है F3 के बारे में। आई गेस वो जल्दी ही लॉन्च करेंगे। 18,000 रुपए में 6GB 128GB 8GB 128GB आपको सिर्फ 20,000 रुपए में मिलेगा फर्स्ट सेल के ऊपर, और 1000 रुपीज का आपको ICICI बैंक का डिस्काउंट में मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है, और 6 अप्रैल से इसका फर्स्ट सेल होने वाला है 12 बजे। तो जिनको भी चाहिए मजा आ जाएगा। और कोई क्वेश्चन है आपको पोको को लेके या कोई भी स्मार्टफोन को लेके, आप पूछ सकते हो। काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप प्लीज सुपर चैट कर दीजिए ताकि वो हाईलाइट हो जाए। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चंस को लेने की। हर्ष ने बोला रेडमी को, ठीक है रहने दीजिए। पोको F3 के बारे में काफी लोग पूछ रहे। जी हाँ, पोको F3 आएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। आई गेस वो भी आएगा, और वो डेफिनेटली 21-22 हजार रुपए की प्राइस में वो लोग लाने की अब सोचेंगे।
मोहन अग्रवाल ने पूछा है अब नोट 10 प्रो की जगह यही ले लूं। जी हाँ, बिल्कुल आंख बंद करके नोट 10 देखो। सीरीज उनकी एक तो स्मार्टफोन की फोन काफी वीक है, आप मोड़ते ही वो फोन टूट जाएंगे। तो फंडामेंटली यार मैं कहूँ, टेक्निकली अगर वो फोन का स्ट्रक्चर देखोगे तो आप वीक है। तो डेफिनेटली आप पोको X3 प्रो को कंसिडर कीजिए। जो भी रेडमी नोट 10 10 प्रो को कंसिडर कर रहा है, रियलमी 8 8 प्रो को कंसिडर कर रहा है, पोको X3 प्रो आंख बंद करके लेने लायक फोन है। अब काफी सारे लोग 5G 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 कर रहे हैं। भाई साहब 5G इंडिया में आया क्या अभी तक? अभी आप फोन ले भी लोगे, फोन को एक साल वापर भी लोगे, अगर आप मेट्रो में नहीं रहते हो, अगर आप मुंबई बेंगलोर दिल्ली में नहीं रहते हो, तो आपको इस साल के एंड तक भी 5G नहीं मिलने वाला। और मुंबई दिल्ली बैंगलोर में भी जो रहते हैं उनको 5G अभी नहीं मिलने वाला है। साल के एंड में वो धीरे धीरे सिलेक्टिव कस्टमर्स को देंगे। और आपको पता है क्या 5G का प्राइस क्या होने वाला है? ऑलरेडी 4G डेटा पैक में बातें चल रही है कि वो प्राइस बढ़ाने वाले हैं। तो अगर 5G आएगा तो एक्स्ट्रा प्राइस के साथ आएगा। क्या आप अफोर्ड करोगे वो 5G पैक लेने का? आप ये सब चीजों को कंसिडर कीजिए, फिर 5G के पीछे पड़े। काफी सारे लोग हैं आजकल जो 5G एक तो 5G आया नहीं है अच्छी से ऑल ओवर इंडिया, उसको पेनिट्रेट होने के अंदर कम से कम 2023 तक वो सब जगह मिलना शुरू होगा। और प्लस उसके जो प्लान्स है वो आपको महंगे मिलेंगे। तो क्या आप रेडी हो उतने महंगे प्लान्स को लेने के लिए? ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगे आपके प्राइस। जो अगर आप अभी 500 रुपए में 3 महीने का इंटरनेट आपको मिल रहा है, वो 500 में नहीं मिलने वाला है, वो आपको 1000 1500 के अंदर मिलने वाला है। तो क्या आप उसके लिए रेडी हो? और पहली बात, आपके आसपास क्या आप मेट्रो में रहते हो? मेट्रो में भी रहते हो तो 2022 तक आपको मिलेगा ढंग से। 21 के एंड में भी मुश्किल से एक आध जगह पे आपको मिलना शुरू होगा। तो 5G के पीछे मत पड़िए इतना। और हाँ, बता दो कि मैं कोई भी पोको के ब्रांड के थ्रू या किसी के थ्रू भी एसोसिएटेड नहीं हूँ। तो जो भी है ये मेरा इंडिपेंडेंट ओपिनियन है। बाकी आपको जैसा समझना है आप समझ सकते हो। डार्क ने पूछा है सुपर एमोलेड है क्या? जी नहीं, सुपर एमोलेड तो आई गेस नहीं है। आपको फुल एचडी आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले देखने को मिल रही है 240 हर्ट्ज की, 120 हर्ट्ज की आपको फुल एचडी आईपीएस डिस्प्ले देखने को मिल रही है। सुपर एमोलेड एज सच इसमें कोई आपको देखने को नहीं मिल रहा है। मोहन भाई ने पूछा है कि कैमरा ठीक ठाक रहेगा कंपेयर टू Redmi Note 10 Pro। जी हाँ, कैमरा आपको 48 मेगापिक्सल का देखने को मिल रहा है। Redmi Note 10 Pro के अंदर आपको 64 और 10 Pro Max में आपको 108 का मिल रहा है। कैमरा कैमरा ही आपकी प्रायोरिटी, और आप कैमरा को बहुत बहुत ज्यादा यूज करने वाले हो तो डेफिनेटली फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है Redmi Note 10 Pro Max के अलावा। लेकिन कैमरा आपको ठीक ठाक है, मतलब कैजुअली आप कैमरा यूज करते हो, नॉर्मल यूट्यूब के वीडियोस के लिए फुल एचडी आपको कैमरा चाहिए तो काम चल जाएगा आपके इस फोन से भी। डेफिनेटली आपको एक पावर पैक मिल रहा है इस प्राइस के अंदर जो आपको Redmi Note 10 सीरीज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। काफी सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुछ अगर रह रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हो, सुपर चैट कर सकते हो। आपका ऑप्शन है नीचे सुपर चैट का, आप वहां से सुपर चैट कर सकते हो। 6 GB लूँ या 8 GB वेरिएंट? JR के गेमिंग इतना गुस्से में क्यों हो? लेट्स गो ऑन फ्लिपकार्ट और वहां पे चेक करते हैं कौन सा वेरिएंट परचेस करने लायक है या कौन सा नहीं है। तो आई गेस इसको हटा देते हैं और विंडो कैप्चर इसको डालते हैं और शुरू करते हैं। फ्लिपकार्ट पे चलते हैं और चेक करते हैं। उसके पहले मैं बता दूं, हमारी वेबसाइट पे एक आपको फ्री 8000 रुपीज का कोर्स मिलेगा। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वेबसाइट की, technews.in। वहां पे जाइए, यहाँ पर आपको ओपन अकाउंट करना है। अपस्टॉक के साथ फ्री है। करंटली 49 रुपीज चार्ज हो रहा है अकाउंट ओपनिंग का। अगर आपके पास डीमार्ट अकाउंट नहीं है तो आप 49 रुपीज में अकाउंट ओपन करा सकते हो। और अकाउंट ओपनिंग के ऊपर वो 49 रुपीज हम आपको रिफंड कर देंगे वापस। तो आपके लिए अकाउंट ओपनिंग फ्री रहेगा, प्लस 8000 रुपीज का फ्री वेबिनार लाइव ऑन लाइव होएगा, वन ऑन वन होएगा। ऐसा नहीं कि सबको बिठा के होएगा, वन ऑन वन होएगा। तो अगर आपको चाहिए तो आप आके हमारी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। चलते हैं फ्लिपकार्ट पे और चेक करते हैं कि कैसा आपको प्राइस वाइस एक बार और डिटेल्स ढंग से एक बार देख लेते हैं फ्लिपकार्ट के ऊपर जाके कि कैसा आपको देखने को मिल रहा है। कुछ अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिस हो रहे हैं तो प्लीज उसको आप सुपर चैट कर दीजिए ताकि उसका आपको आंसर मिल जाए। नहीं तो मैं कोशिश इतनी कर रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन को मिस नहीं करूँ मैं। प्लीज जो भी है स्पैम मत कीजिए, या फिर स्पैम करोगे तो बाकियों को क्वेश्चन का ऊपर आएगा नहीं। तो स्नैपड्रैगन 860 है, वो तो हम सभी को पता था कि होने वाला है। नॉर्मल आपको आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। एक काम करते हैं, उनकी वेबसाइट पे जाके देखते हैं पोको इंडिया की। पोको इंडिया इधर होगा आई गेस।
होम पे जाते हैं, चेक करते हैं। यस, X3 Pro। अभी अपडेट नहीं हुआ है उनका वेबसाइट, एक बार अपडेट हो जाता है तो वहाँ पे एक बार अपन को दिख जाएगा कि कैसा क्या है। ठीक है, जब तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ए बी सीनियर ने पूछा है वाई प्राइस कितना होगा 6 GB 128 GB का, कब सेल होगी? 6 अप्रैल से आई गेस सेल शुरू होने वाली है। प्राइस 17 या 18 हज़ार रुपया है। एक बार इनका फ्लिपकार्ट का पेज भी रिफ्रेश कर लेते हैं, देख लेते हैं कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। उन्होंने अभी तक डाला नहीं है, एक बार अपन वेट करेंगे थोड़ी सी देर, अगर आ जाता है तो ठीक है। बाकी 16 17 या 18 हज़ार आई गेस है प्राइस पोको का बेस वेरिएंट का। बेस्ट फोन है रेडमी नोट 10 प्रो को कंसीडर करने वाले, डेफिनेटली आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये फ्लैश सेल में आएगा या एक्सचेंज ऑफर रहेगा? श्री कृष्णा जी बिल्कुल चेक करेंगे एक्सचेंज ऑफर है कि नहीं है। फ्लैश सेल ही होगा आई गेस। फ्लैश सेल मतलब नॉर्मल सेल होगा, जितने यूनिट्स होंगे अगर आउट ऑफ स्टॉक हो जाते तो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे। उमा पाल ने पूछा है मस्त प्राइस, जी हाँ बिल्कुल बेहतरीन प्राइस पे उन्होंने लॉन्च किया है, बेहतरीन स्मार्टफोन है, डेफिनेटली वर्थ कंसिडरिंग है। और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर पोको F3 इंडिया में आता है, डेफिनेटली 25 हज़ार के अंदर उसका बेस वेरिएंट आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। बेस्ट फोन होने वाला है, बेस्ट। कार्तिक ने पूछा है अभी चाहिए तो कैसे ले? अभी तो नहीं मिलेगा आपको, 6 अप्रैल से आपको मिलना शुरू होगा, तो अभी तो नहीं मिलने वाला। तो अगर आप वेट कर सकते हो 6 अप्रैल का तो वेट कीजिए, तब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अभी तो कहीं मिलेगा। एक मिनट चेक कर लेता हूँ। पोको X3 प्रो M2 है। हाँ, आएगा, 2 मिनट हम रुकते हैं, चेक करते हैं, आई गेस आना चाहिए। फिंगरप्रिंट कहाँ पर है? फिंगरप्रिंट आई गेस वो साइड में आपको देखने को मिलने वाला है, साइड माउंटेड, जैसा नोट 10 सीरीज में वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। कल F3 की अनाउंसमेंट होगी या F1 की वालों के एक्सचेंज ऑफर मिलेगा? F3 की तो देखो अनाउंसमेंट आज सच उन्होंने कुछ कहा नहीं है, वो कह देते इतना बड़ा इवेंट हो रहा है तो उसी में वो लोग कहते थे कि कुछ लाने वाले हैं कि नहीं लाने वाले। एज सच तो उन्होंने कोई अनाउंस किया नहीं है अभी तक। करेंगे तो आपको अपडेट मिल जाएगा कि आने वाला है या नहीं आने वाला है। और भी कोई स्मार्टफोन को लेके किसी भी चीज को लेके आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। अर्ली बर्ड प्राइसिंग क्या होती है? 17,999 है इसकी प्राइस। तनिषा जी, तनिषा अग्रवाल, अर्ली बर्ड प्राइसिंग मतलब आपकी फर्स्ट सेल पे कुछ समय के लिए स्टार्टिंग कुछ लोगों को वो आपको डिस्काउंटेड प्राइस में देंगे, उसको अर्ली बर्ड प्राइसिंग कहते हैं। यूजुअली फर्स्ट 1 या 2 सेल में होता है, जब पहली बार फोन फर्स्ट सेल पे जाता है ना 6 अप्रैल को, उसकी फर्स्ट सेल होने वाली है, तो उस दिन जो लोग खरीदेंगे उन्हें स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा, क्योंकि वो सबसे पहले उस स्मार्टफोन को खरीदे, तो उनके लिए अर्ली बर्ड डिस्काउंट मतलब उनको पहले ये फोन वो पहले खरीद रहे हैं, इसके लिए उनको 1000 रुपीज का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है आईसीआईसीआई बैंक के कार्ड के थ्रू। 8 GB की प्राइस आई गेस अपडेट नहीं हो रहा है। प्राइस तो मेरे ख्याल से दोनों ही स्मार्टफोन की 20 हज़ार के अंदर की है, इतना शायद पता है। पोको के ट्विटर हैंडल पर चले जाते हैं ना अपन, इधर वेस्ट क्यों कर रहे हैं टाइम, सही दिमाग ही नहीं चलता। पोको इंडिया ट्विटर, ये रहा। प्राइस अनाउंस नहीं किया है अभी तक, तो इनका पेज बहुत लेट अपडेट होता है, अपडेट होता तो अभी तक पता चल जाता। दोनों ही स्मार्टफोन के आई गेस 20 हज़ार के अंदर की है प्राइस। 8 GB वाली अगर 22 हज़ार की है तो भी ठीक है, ज्यादा कुछ आपको महंगा होता हुआ नहीं दिखने को मिला।
लाइव स्ट्रीम के लास्ट में देखो किसी ने कुछ बोला है, अगर कल ऐसा कुछ अनाउंस होने वाला है तो आपको उनके ट्विटर हैंडल पे देखने को मिल जाएगा। $1799 एंड 19,999 है, यानी 18,000 और 20,000 रुपए का स्मार्टफोन है। जी हाँ सत्येंद्र भाई, प्राइस अनाउंस हो गई है। F3 रीनेम में 11X25 तक आएगा। नहीं पता कि रीनेम होके आएगा कि नहीं आएगा, देखते हैं कि क्या होके आता है। जागरूक भाई 6GB 64GB वेरिएंट नहीं आएगा, 6GB 128GB बेस है। और कोई क्वेश्चन? जी हाँ, ये देखिए यहाँ पे प्राइस आ गई है। आई गेस उन्होंने भी प्राइस लाई तो थी। चेक कर लेते हैं पोको X3 प्रो। 19,000 से शुरू हो रहा है, 1,000 रुपीज फ्लैट डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा जो भी फर्स्ट डे पे फर्स्ट सेल पे ले लेते हैं। पीर ने बोला है कि 2-3 हजार और ले लेते हैं, एमुलेट दे देते हैं, फिर प्राइस बढ़ जाते तो फिर काफी लोगों को लगता है कि प्राइस बढ़ गई, क्योंकि एमुलेट डिस्प्ले जो आती है वो थोड़ी महंगी टेक्नोलॉजी है, तो थोड़ा आपको प्राइस भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है उसके लिए, फिर बाकी लोगों को नहीं जमता। ठीक है, अगर आपको कुछ सस्ते प्राइस में चाहिए तो आपको कुछ खोना भी पड़ेगा। 10,000 के अंदर आना था लाइट भाई, एकदम ही लूट मचा रखी है आपने, 10,000 के अंदर आना चाहिए था। अभिषेक कुमार ने पूछा है इफ F3 व्हाट विल बी द प्राइस। F3 अगर आता है तो मेरे ख्याल से 25,000 के अंदर का प्राइस आपको देखने को मिलेगा उसका स्टार्टिंग वेरिएंट का। Realme Narzo 30 Pro वर्सेस Poco X3 Pro। Poco X3 Pro एनी टाइम। अभिषेक भाई मैंने बता दिया अगर F3 आएगा तो क्या प्राइस होगा। तो आई गेस बस इतने ही क्वेश्चन है, बाकी सब रिपीटेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं। एक बार फ्लिपकार्ट के ऊपर जाके चेक कर लेते हैं कि उन्होंने प्राइस अनाउंस कर दी है कि नहीं की है। मतलब प्राइस तो अनाउंस हो ही गई है। उनके उस ऑफर पेज पे जाके एक बार दिख जाता तो अच्छा रहता कि कोई ऑफर है या नहीं है। ओवरऑल फोन अच्छा है, ऐसा नहीं है कि फोन अच्छा नहीं है, दी बेस्ट स्मार्टफोन है अगर किसी को कंसिडर करना है तो। 8999 की है, 6GB 128GB की, आपको 17,999 में मिलेगा अगर आप फर्स्ट डे पे कंसिडर करोगे तो इस स्मार्टफोन को। और तो ये है स्मार्टफोन की प्राइस। बस उम्मीद करता हूँ लाइव स्ट्रीम पसंद आई होगी। अभी नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम नेक्स्ट स्मार्टफोन अभी तो कोई एज सच लॉन्च हो नहीं रहा है। कल शायद सैमसंग का एक लॉन्च होने वाला है S20 फैन एडिशन, देखते हैं वो कैसा होता है। तो फिर